Hello, good evening, everyone. So, myself Rahul Sharma, and we were starting this topic. I would like to let you know that why we are all are doing this. So, the purpose behind this session is very well connected towards the vision of Gurudev, which is to put smile on everyone's face and to make our life easy. And diet and mind and body are very important to be happy or to be comfortable in our life. And today's topic is related to that only. Our topic is Welcome Summer, and we have a very wonderful guest with us. Her name is Pooja Agrawal. She is an engineer, an art of living teacher, a chronopsychotherapist, a dietitian, and as well as astrology student. And today she is joining us, and she'll be discussing this topic in details, and we'll be taking your questions as well in the end. But before that, we would like to welcome her. I would like to welcome her on everyone's behalf. Welcome, Pooja Ji. Huge, Gurudev. Jai Gurudev. And it's over to you. We would like to we are very we would like to know first that how your journey started, how you come on this path from mechanical engineering and then did so many things along the way. So if you can just start with that, we'll be very happy. Thank you. Yeah, so that's quite an interesting story for myself also. I still wonder how did all that happen. Yeah, so at least 10 years back, like around 2010, 12, most of us, when we chose our professional career, we didn't even know where we are going to land up. Yeah, so the same happened with me. I chose mechanical engineering, and though towards the end of my engineering, actually throughout my engineering, I had very good marks, but the interest level was very low. Okay, I right from the start of my engineering, I knew I have to do something else, but what? Yeah. So after I passed my engineering, I went to Bangalore to do a professional work. But yeah, I was not working as a mechanical engineer even then. Somehow I got lucky to do a management work in my company where I was working. And we can call it luckily or unluckily, I just became very unwell in a particular period of time. And someone suggested me craniosacral therapy. Okay. And yeah, of course, I had done my art of living course during my engineering. And I was, in art of living on and off till I came to Bangalore. So once I came to Bangalore, it was like full on. But yeah, so I became unwell and someone told me to do a CST therapy. Like what? I didn't even ask what was that. I just went and lied out on the CST table. Okay. And the therapist was doing something. And she was so respectable even then and now that I didn't even ask what's going on. And, she had, towards the end of the therapy, she had her hand here in my back and she told, what do you feel? And I was a physics student. Yeah. And I told, there's some rectangular box and there's some white fluid moving in it. She told, oh, you just defined a vertebrae. And I was like, what's a vertebrae now? I just smiled, okay, yeah, it's a vertebrae. And then she's like, you need to learn the therapy now. It's like, no, my job is going great. My art of living, I had become an art of living teacher by then. So my art of living is doing great. I have good friends. I have great friends. Super life is going on. I am not learning a new thing, but of course, such senior people I couldn't deny. I thought one semester I'll do, then I'll say I didn't like it. Okay. But somehow just after the first, so it's a 10 semester course. The moment I just finished my first semester, from then only I started somehow, through me, it started happening. A very nice therapies. People really had good results from it. So I thought, okay, one more and one more and one more. Doing that, I became a therapist. Okay, so then just this craniosacral therapy added in my life. So life was going good, and then I got married. And some very senior art of living teacher told me that, see, we have a lot of good engineers in this world, but very less good therapists. So why don't you leave your job for some time and explore this area? So I left my job and I was giving my therapy after my marriage. And one of the person who came was a dietitian. One of my client was a dietitian, and
she just told me some few basic tips of diet. I said, can you just tell me which college have you read? I'll ask the teacher to give me personal tuitions. Okay. Because I found out that food is such an important part of our life that without doing that, how many doctors you visit, how many therapists you visit, whatever you do doesn't help in long term. So I had realized by then that if I need to help my clients, I also need to help them with food. And it's a real miracle that being an engineer, I got admission in a government, like in a very nice college, full-time college. And I read there and I had really again passed out with very good marks, competing few doctors even. Okay, so that was also, I would say, a grace. And then Corona happened, yeah. And then I became a yoga instructor also, because then I found out that even exercise is as important in our life as food is. So therapy is obviously important, but for the maintenance part, food and exercise both are equally important. So I became a yoga instructor. And then after that, again, someone suggested, why don't you learn astrology? And trust me, I had zero faith in astrology. Okay, we all believe that Guruji is there in our life. Why do we need astrology, right? But I don't know why I registered for it, and that was one more step which changed my life, because that's, the way most of us have taken astrology in a very, have like heard or have experienced astrology in a very superficial way. So my teacher is like really awesome, and he took astrology in a very spiritual level. So I'm learning that. So now I've combined everything, and I do a holistic health consultant. I also have a YouTube channel in which I've put some few very nice recipes. So you can see that in Punarnava with Pooja. Maybe I can ask Rahul to post the link of that Yeah. channel there. Yeah. Sure. We will do And that. yeah, so this is how it all happened. And now I'm doing that full time. And I'm so happy about it, because that smile when you see in someone's face of getting healed, of becoming more healthier, there's no replacement of it. Any amount of money cannot replace that. And recently, one of our class 1 officers, I was just meeting some, and she was like, I wish, she told me, that class 1 officer told me that I wish I could live a life like you. That was such an important moment for me, that sometimes we seem to doubt things, but such reconfirmation comes to you again and again, that it's such a beautiful thing to help people have a healthier body and mind. So this is how all it started. So yeah, this is it. Then now we can take up your questions. Okay. It's so nice, your journey, to hear it from you, and so inspiring also to many of us who, if anyone who is watching these videos wants to take these courses which you have taken, like dietitians or astrology. So it's such nice of you to share all these things. So I just want to begin with these basic questions which many people have in summer, like what foods should we eat, what kind of food we should eat, and what is the best food, or the most recommended food that we must have in summer to reduce many ill effects of this season. So if you Yeah. can let us know about that. So when we decided about this session, the topic was summer, right? Yeah. So summer, I would call summer is not just a season; it's a festival, right? We have certain rituals for summer, and now it has been scientifically proven that most of it is very, very important and crucial and logical and scientific. Yeah. So like soaking mangoes in water, that is, we as children always did that, no? Parents brought mangoes home and we soaked it in water using khaskhas. So I purposely sat here in this place so that you can see that cooler behind me. So we used that khaskhas in our house. Okay, so that's very important, that's very scientific to help us in summer.
Then we used to make sharbats, a lot of sharbat we make. So these rituals are actually very scientific, and it helps us in summer. Okay, so summer we can call as summer season is equal to pitta season. If we can manage our pitta, we can celebrate summer. So coming back to the question that what are the things which we should have and what we should not have. So if we classify it by taste, we should have sweet. Sweet means doesn't sugar. It's not sugar, huh? Sweet food, astringent foods, and bitter food. Okay, and what we should avoid is salty food, pungent food, and sour food. Okay, so sweet means we can always have natural sweet things. Like in summer, we get a lot of sweet vegetables. See, nature is very intelligent. Okay, it's very intelligent. It always gives us things which we should actually have at that time. So mangoes are sweet, watermelons are sweet, and kharbujas are sweet. So we have a lot of sweet fruits at this time. So we should have those things. And let me tell you some of those superfoods which we can have in summer, which really helps us. Okay, so we can have avla, we can have alkaline vegetables, we can have, that bale. Have you known about the bale ka sharbat? That's like superfood at this time. This really, really, really helps our stomach to have good digestion, because see what happens, the external environment has such high heat, so our body, to balance that heat, naturally reduces the pitta in the body, in the stomach. So our digestion becomes little poor. So that is how naturally we want to have little lighter food. Yeah, we all want to have a little lighter food in summer, no? Some short meals and light meals. So this is what that we should have. So bale really helps to improve your digestion, because the digestion has gone down. We cannot have very sharp taste food, oily food, spicy food at this time, because our digestion has become low to manage the temperature of our body, overall temperature of our body. Yeah. So bale, ghee, avla, khas, alkaline vegetables, watery fruits. What else? We can have, so we can add certain herbs like ashwagandha, neem. Neem really helps to, so a lot of people get a lot of skin issues during summer. Yeah, so neem really helps to reduce that. Then we can also have satavari. Okay, so this all herbs also you can add during the summer. Of course, you should have a lot of fluids, because we drain out a lot of fluids during this time. So having a lot of fluids with as less as possible white sugar. I would actually say no sugar, but at least as less as possible. So we can have a lot of sharbat. With coconut is also a superfood which we can add. Yeah. So coconut water you can have chas, you can have mint, yeah, and coriander. All this has a really, really, really cooling effect in our body during summer. So these are few things which we can add. So what next? Tell me. This is the, and yes. Before we go forward, I would really want to emphasize this and want you all to know that whatever we are talking here is a general thing for everyone. Okay, it's not a specific thing which you take as a medicine or a medical suggestion. Okay, it's a very generic suggestion, because all of us, our bodies are very different, and at different times we have different prakritis and vikritis in our body. Not prakriti is the same, but different people have different prakriti here. So the vikriti keeps changing, and we are at different state of health at all point of time. So this is not a specific prescription for you. Okay, so these are general things. If there is something which you really want to know very personally about your body, so then you can, Rahul will post my details to you, and we can take that up later. But a very, very big star mark, note it,
that this is not a specific consultation for anyone. These are general suggestions. These are general things which we can take up in summer. Yeah. Yes. Do you want to recommend any general medicines as well, like triphala or anything which people can have to, as you said, the digestion level goes down. So, is there any general Yeah, so precaution? Brahmi we can take. We can take ashwagandha so that our stomach is good. Brahmi is very good. Triphala is also good, but then again, it goes with different people's different state of body. So these are herbs which are good and general taken in small amounts. We cannot very specifically say that these herbs can be taken by everyone, because everyone has very different state of body at different point of time. But yeah, Brahmi is good. Yes, we can also have here we can use some oil, some good oils. Like we can use jasmine, we can use coconut oil to even to cook. Jasmine is not to cook, but coconut oil we can even apply in our body, and we can also use for cooking. This really helps cool down our body. Coconut has a very cooling effect, so applying oil in your body before taking your bath helps bring down the pitta of the body. Yeah, so that is one thing which everyone can do. Most Okay. of you, if someone is not having a specific skin disease. Okay, and there is one more very general question. It's about using air conditions during summer. Like Yeah, people, I mean, everyone prefers uh, to use that. Uh, like they sleep mostly under air conditions only. Like most of the people prefer to that. So how healthy is it, or is there, or people should minimize its uses, and how one should use it, how often one should use it in yeah. a day? So see, of course, we all have also experienced. We all have most of us have experienced air conditioning, and we have also experienced that how being in air condition dries our body, dries our skin and all. Most of us have seen that even in winter, our lips doesn't go as dry as in summer it becomes. Why? Because we stay in air condition, and air condition has a technology. Okay, now so that becomes a mechanical engineer's question. So it takes up the moisture from the room, okay, and it also obviously takes up moisture from our body. So we are already in a season where pitta is high, where moisture is low. We want to hydrate ourselves as much as possible, and staying in air condition reverses the process. So, but then still we live in a state of, uh, you know, state where we cannot avoid it. But yes, as we can reduce its usage, and see, whichever in most of the places in India at least, we can use the coolers, and Water coolers, using yeah. yes, water coolers, and the khaskhas which is used there is always keeping the moisture high in the room. So that is Okay. actually helpful, and air condition is actually negative. But yeah, there's one thing which you all can do is, if you have to be in air condition, you can keep a vessel of water in the room. Okay. So it takes up the moisture from the vessel instead of you, as much as in at least in a particular levels. So that is one thing you can do to reduce its um, bad It's effect. okay. Yeah. And there is, of course, one question is about tea and coffee. Like a lot Yeah. of people are, like they can't help themselves. They have to have the tea or coffee at least once in a day. And so how I mean, of course it's like in general also it's bad, but in summer how it affects more, or how people can minimize its effect. Like they should take, if they want to have tea, they should avoid it to take it with sugar, or take it with jaggery or other things, or how is it? See, what you will recommend? Yeah. So see, I never say anyone, being an art of living teacher also, I never say Okay. anyone to stop tea or coffee. But Okay. yes, we should definitely reduce its usage, at least in summer season, because it again it increases your pitta and aggravates your mind. So Okay. the whole process I told you, it becomes a festival if we can manage our pitta. Every food, every single lifestyle thing, every single thing is about managing your pitta, how we Yeah. can reduce it. So this aggravates it. So
The base thing is take it as less as possible, because a lot of people have got a habit of it. They cannot leave it. So that's fine having once in a day in a lesser amount, but we should reduce its usage as much as possible. And the sugar and jaggery thing, see, jaggery in summer is actually a little, it is not a coolant actually. Okay, it is not a natural coolant. So it goes by a natural thumb rule that sugar has sulfur, so it has a bad effect to our body, and jaggery is not. So it goes by the same rule and not by any specific summer rule. And one more thing is that in summer people like there is a lot of low energy. There is a lot of low. People don't feel that much high on energy, and there is a lot of lethargy. We don't feel like doing a lot of work, and there's a lot of drain of energy which happens, and it also disturbs the sleep cycle. Suddenly, like if we compare it to other seasons, people have more disturbed sleep. I think they experience some disturbance and they don't get that much deep rest in summer. So, uh, would you recommend, apart from foods, would you recommend any kind of exercises or yoga to help in this or to keep the prana and energy, Yes. specifically related to summer? Yeah. So how it is that exercise, how much exercise should we do? Exercise should be almost around 50 to 60% of our capacity. We should not do too much exercise during summer, because again, it can increase your pitta. Okay. So, and it is recommended that we should not do exercise in the daytime. Like day means from 10 a.m. to maybe evening 4 or 5. You should do either in the early morning or in the evenings. Though a lot of people now go to gym and do it in the AC, and again we have discussed things about AC, right? So, but then doing yoga in the early mornings and in the evenings is a better idea. Okay. Now, what should we do? We should reduce exercises. We should do which doesn't have a lot of holds. Okay. It should have a flow, like um, we can have asanas which helps the stomach area to get activated. Okay, so we can have child pose, we can have cobra pose, we can have bends, we can have child pose. So all this are a good idea, not a lot of holds. A flow of asanas are a better idea. Okay, what can be done? What can be those things which can be increased? Those are pranayams. Okay, pranayams also, which pranayams are cooling pranayams, like sitli, sheetkari, nadi shodhan. All this pranayam really helps to cool down your body and gives a lot of energy. And then since we are here in Sattva Talks, we obviously have to talk about meditation, right? So meditation is something which would really help calm down your mind, calm down your body, and give you a lot more energy, because we are not anyways able to have a lot of food, right? We tend to say we are not able to eat and all. So this really helps you balance your entire system from all levels. So we should do a lot of meditation at this point of time during summers. And yes, yoga nidra. We're talking about sleep. Yes. So sleep also we can have, some yoga nidra we can definitely have, and we can have short naps in the daytime. Okay, very short nap, once or twice maximum. Once we can have a twice max. So that short naps helps regenerate the body again. And the best thing is yoga nidra. I hope we all know yoga nidra. So yoga nidra is something which really regenerates your body. Yes. So that is something which should be done, and also we should make sure that there's a tendency to sleep late during summers, but we should sleep at least by 10:30, 11. We should definitely go to sleep. So once we have that cycle going, it really helps the body in a huge level. And talking about sleep we can have a different session altogether on sleep.
So sleep is a really, really, really important thing which we should take care, which most of us don't. And yes, why do we have interrupted sleeps? Because the temperature of the room is not right. Yeah. So if we can manage things, so we, if you would have heard in previous times, people who did not have any other equipment, they used to sprinkle water in their room before sleeping. So that also maintains the temperature of the room. Yeah, and other things are obviously there, the coolers and the other technical equipments which keep the temperature of the room constant in a little lower state than the huge high temperature which is there in summer. So once you have that temperature, the high probability is there that you will go to sleep. And if you're taking the right food, you're following the right lifestyle we're talking about, you follow all that, you'll get right sleep. We don't get the right sleep because we tend to, eat wrong food like ice creams, cold drinks, carbonated drinks. We have that, and then our system get out of balance, and then we don't get sleep. Yes. So this is about sleep and exercise. So the like in how what is the correct time in which at which people can have dinner in summer, especially what will become like by 8 or by 9? How much when they should have? Yes. So by 8, if by 8:30 people can have their dinner completed, that's awesome. And if someone is feeling hungry again, and see, because we tend to have very light meals during summer. So if someone gets hungry again, they can have turmeric milk with ghee in the night, not hot, warm. Yeah, or we can have some other juices, some light drinks, natural light drinks before sleeping. So that helps you maintain the hunger also and the energy levels also. But of course, having food a little early is good in all ways. Okay. And the many people, generally recommend to have warm water. If you want to drink water at normal temperature or a little warm. But in summer, naturally, people prefer to have cold water or refrigerated water. Yes. And also, like kids, they used to, and from current advertisement and everything, people watch that and have a lot of carbonated drinks as well. Like that consumption increases during the summer. So, of course, how they affect our system, and uh, how much should we avoid this cold water, or is it okay to have in summer cold water? So, see, obviously in summer, hot water or warm water cannot be consumed. Yeah, Yeah. it cannot be done. But yes, room temperature water is good if you can have. Refrigerated water and ice water is a no. Why? Because see, our body, it actually constricts our blood vessels. Okay, it constricts the blood vessels, and it reduces the absorption of nutrients from our food. Also, it hardens the fat which we take from our food. So the digestion of fat becomes difficult, and we know what happens when fat accumulates in our body. So we don't want that to happen, right? So that is how we should not have cold water. Cold means refrigerated water or ice. Okay. But yes, we can have, we live in India and we have super artists who have very nice art in the pots, in very nice, beautiful, different shaped pots, earthen pots. And that really, I really think that if we keep it in a right way, covered with wet cloth and all, putting khas into it, it also gives you a very nice smell. Plus, the temperature of the water is really, really nice, and it gives you a nice flavor also. So you can definitely have that. And if we talk about carbonated drinks, yes, carbonated drinks seems to, pacify your thirst, but it actually is the other way, because it has a very high sugar content in a body, and when such high sugar gets comes to the blood vessels, it actually pushes out the water. Okay, so you are again deprived of water and you want to have more, and then you again have more carbonated drinks and you feel more thirsty. So it's a cycle.
Plus, we all know sugar, such high sugar is not good for body. Also, sulfur sugar increases the acidity in our body. We feel bloated. Actually, we get bloated and we feel that we are full. We are not full, we are bloated. Yeah. So Okay. carbonated drinks are definitely not good. It gives you a tendency of having diabetes and acidity and acid reflux and many other things. Yeah. So Okay. having natural sweeteners is very good. So I told you to bail. That's my personal favorite. My refrigerator is full of bail. So every day I have that. It's really, really nice. So bail you can have. You can have sugarcane juices. You can have mint, a lot of mint drinks, lemon drinks, chas. We have more than enough of it. So many of its kind. Watermelon juice. So many of its kind, right? We are not deprived of flavors in India. Right, right. This is summer time, and of course, everyone's favorite fruit is mango during this season. Yeah. So this is just one basic question that generally in Ayurveda, it's recommended not to have fruits with milk, or Yes. not to mix both of those. But in a lot of parts of India, this this season people have mango milkshake or make mango ras, and they consume it in very like almost on daily basis. So how is it like? Is it also prohibited for mango as well, or mango can go along with milk? Actually, if you talk about Ayurveda, I am not an Ayurvedic doctor, but still to Okay. answer this question to my best of knowledge, uh, milk cannot be mixed with any fruit. I think Okay. I think only banana can be mixed. I am not very sure about it, but I think banana can be taken. It's not wrong, but rest no other fruits can be mixed with milk. Milk cannot be mixed with fruits. But yes, in India we have it. A lot of us have it, but yes, we can have it for taste once in a while, but let's not make it a very regular habit. Mango itself has the most wonderful taste ever. Let's Right. enjoy it in its originality, and we have such diverse variety of mangoes in India. Why don't we have different kinds of it? Right? We can Right. have that instead of making mango milkshakes. Right. Yeah. So we will be taking some questions from participants. If anyone wants to, if anyone have any questions, please can raise your hand and we'll take it. Actually, the session, no, it could have been mixed with Hindi and English. Many of them in YouTube also they have mentioned the session in Hindi. We could have asked many questions. It's okay, doesn't matter. You can आप लोग अभी भी कोई question पूछ सकते हैं हिंदी में. It just No, I'm not. I just referred YouTube just now to see whether any questions that come in chat box or not. There they have written it as Didi आप हिंदी में बताए तो सही है. It's not for question. They have not asked any question. They simply said speak in Hindi. That will be beneficial for जय me. गुरुदेव. हाँ, जय गुरुदेव. विचारा हिंदी मध्ये विचारा. हाँ, जय गुरुदेव. हाँ, बोलिए. मुझे ये गर्मी में इतना वो क्या बोलते हैं, परसेवा बोलते हैं ना, वो इतना होता है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? क्या होता है आपको? गुजराती में उसको परसेवा बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं. पसीना तो नहीं. हाँ, पसीना. हाँ, हिंदी में पसीना बोलते हैं, इंग्लिश में पर्सपिरेशन. हाँ, या मंजुला जी, सबको होता है, हम सभी को होता है. दैट्स अ नेचुरल टेंडेंसी कि हम सभी को होता है. तो अगर हम जनरली मतलब अपना ओवरऑल पित्ता बैलेंस रखें, जैसे so my best friend is a Gujarati, okay, so I know the kind of food which Gujaratis have. Yes, it's little pitta and vata aggravated, okay. So अगर हम उसको थोड़ा मैनेज करते हैं ना, you can take a lot of consume a lot of liquid. Okay, sorry, आप बहुत ज्यादा
लिक्विड चीजें अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। जब आप वो करेंगे ना तो वो मैनेज थोड़ा बेटर होगा। और आप अपना फूड पे ध्यान दीजिए। आप एक बार देखिए कि मैंने जो कहा है आप उसमें से कितनी चीजें लेते हैं। घी, आप घी इंक्रीज कीजिए अपने बॉडी में, अपने फूड में, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो आपको ना इसमें अपना ये एक काफी पर्सनल हो सकता है कि आप क्या लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आप क्या खाते हैं अपने नाश्ते में, खाने में, डिनर में, है ना। डायबिटीज है ना तो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है ना फिर। हाँ, रिस्ट्रिक्शन आ जाए, मगर आप डायबिटीज में घी खा सकते हैं, ठीक है। घी तो ठीक है, खाते हैं। हाँ, तो फ्लूइड आप लीजिए। आप जितना ज्यादा फ्लूइड लेंगे उतना ज्यादा आपको आपकी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है ना वो मेंटेन करने में हेल्प होगा। प्लस आप कोकोनट वाटर लीजिए, उससे एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हाँ। तो वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन होगा ना तो आपको उतना पसीना नहीं आएगा। फ्रूट Yeah, खाए और सब एक खा सकते हैं। आप फ्रूट खा सकते हैं, बट अगर आपको डायबिटीज है, हमको देखना होगा कि आपका इसलिए डायबिटीज वो नहीं कितना है। खाती, वो हाँ, नहीं। हाँ, तो हमको ऐसा नहीं है कि आप खा नहीं सकते, मगर आपकी डायबिटीज कितनी है उसके हिसाब से आपको पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको कितना अमाउंट में खाना है वो देखना होगा। वो ही है, ठीक। ओके, और नहीं एक सवाल है कि मोस्टली इन समर क्या होता है कि यू डोंट फील लाइक ईटिंग, यू नो, यू फील लाइक ड्रिंकिंग ओनली, दैट मेक्स अस यू फील enough, that's it, and you need sleep, that's it, you are feeling lethargic and so many things happen. आप हिंदी में बोलो। हाँ ठीक है, मैं हिंदी में बोलती हूँ जी, सॉरी, मैं गलती से बोल दिया उनको देख के। हाँ, वो क्या है, खाना बहुत कम जाता है, पानी वो ज्यादा उसमें चला जाता है, लिक्विड फूड में ठीक हो जाता है। तो इसको क्या करें, मतलब समर बोले तो वही बाहर जाना भी तकलीफ होता है, ऐसा सब इन सब चीजें में व्हाट डू यू सजेस्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट अस ड्यूरिंग द समर, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। बाहर गए जाएंगे धूप में, वो होता है सनस्ट्रोक होता है, एंड उसकी वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है, एंड जाना तो जरूरी होता है सो और खाना भी ठीक तरह से नहीं खा पाता है, थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा आप जैसे बोले लिक्विड, वही बोलते हैं कि कार्बोनेटेड वैसा वो वाला ड्रिंक्स पिया तो वो सही नहीं होता है, चास वैसे ही पीना पड़ता है ना, जैसे आपने को जिसको डायबिटीज वगैरह नहीं है वी कैन टेक, इन अदरवाइज इन व्हाट वे यू कैन, ये कैसा हम मैनेज कर सकते हैं वो बताइए आप। एक छाछ इवन डायबिटीज वाले लोग भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड सी यस ऑफ कोर्स, सी अगर हमने अपने बॉडी के साथ टॉर्चर किया है तो हमको उसका ख्याल भी रखना होगा। अगर हमने अपने आप को डायबिटीज दिया है तो अब हमको थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो घर से ड्रिंक्स बना के लेकर जाना पड़ेगा, है ना। तो आई मेक श्योर, लाइक आई थिंक ना everyone around me, there are so many people who know me, I've stayed in different cities of India and everyone knows कि मेरी बॉटल मेरे साथ ही होती, so that has become a part of me। जैसे मोबाइल कैरी करते ना वैसे मेरी बॉटल मेरे साथ रहती। करेक्ट, तो यू कैन एक्चुअली, एंड समर में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ वाटर यू कैन टेक योर फ्लूइड्स, मिक्स फ्लूइड्स विद इट। जैसे शुगर केन जूस है, इट वो फ्लूइड भी है और वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब आपको आपका पेट भी भरता है, आपको पी के ऐसा लगता है कि हाँ एनर्जी आई है ना। एंड अनदर थिंग आई वाज टेलिंग यू, सुपर फूड ऑफ समर इज घी। तो घी का ना ऐसा कुछ मतलब देयर इज सम टर्म इन डाइटिशियन थिंग्स, इट्स द ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज हाई, ठीक है। तो वो आपके बॉडी को कूल भी करता है और वो ज्यादा टाइम तक आपका पेट फुल भी रखता है ना। तो एक्चुअली इफ यू आस्क मी व्हाट आई डू इज आई ईट क्वाइट अर्ली, मैं जल्दी खा लेती हूँ अपना खाना। तो रात को सोने से पहले मैं 1 चम्मच घी ऐसे ही ऐसे ही नॉर्मली पी के हो जाती हूँ, तो देन आई डोंट फील हंग्री एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, घी हैज अ सुपर टेस्ट एंड इट्स नॉट नेसेसरी। आप लोगों को भी ऐसा करना है जरूरी नहीं है। हम घी को इंडिया में बहुत अच्छे फॉर्म्स में खा सकते हैं, हम अपने खाने में उसको ऊपर से डाल सकते हैं, हम उसको दूध में डाल के खा सकते हैं, है ना। तो बहुत तरीका है खाने का। आप कोकोनट खा सकते हैं, कोकोनट का भी बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है और वो स्टमक भी फुल करता है। सो
ये सारी बहुत सारी चीज होती है जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। प्लस सी आई एम सिटिंग विद थिंग्स व्हिच आई एम सेइंग, वो बोलते हैं ना फॉलो व्हाट यू प्रीच। तो ईट, वी शुड वेयर लाइट क्लोथ्स, cotton clothes. We should make sure that when we are going out, our head is covered with a cotton light colored cloth, ताकि वो और हीट, क्योंकि हमारा बाल मोस्टली वाइट ब्लैक है ना, तो वो और हीट एब्जॉर्ब करता है ना, तो फिर वो उतना ज्यादा हीट ना ले। हमारा हेड कवर्ड होना चाहिए, सनग्लासेस रहने चाहिए, क्योंकि आईज से भी बहुत ज्यादा पित्ता हमको फील होता है ना। तो आईज हमारे गॉगल्स कोई कलर नॉन पावर्ड ग्लासेस के साथ कवर्ड रहने चाहिए। सो इफ वी टेक ऑल दोस प्रिकॉशंस, यस, जैसे हमने शुरू किया था वो हो जाता है कि समर बिकम्स अ फेस्टिवल अगर हम पिता मैनेज कर ले तो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ लॉट ऑफ टिप्स ऑलरेडी। या नाइस टिप्स यू गिवन, अच्छा लगा। मैं और दूसरा बात है कि किसी को मैं बहुत जन को ऑब्जर्व किया, उनके नाक से ब्लड आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द बॉडी। Sometimes if they are not while sitting or while sleeping also blood comes from nose. Yes, इसको क्या करें? See, that is one of the feature, हिंदी में ना, ये एक बहुत नेचुरल चीज है उन लोगों के लिए जिनका पित्ता बहुत हाई होता है। तो जिन लोगों का बाय नेचर में भी उनकी प्रकृति पित्ता होती है, उनकी विकृति भी पित्ता होती है, प्लस फिर तो उनके लिए तो ये नेचुरल चीज है होना। तो हमको इसलिए हम कहते हैं ना कि हमको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से एटलीस्ट 2-3 महीने में एक बार चेकअप, हमको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हमारी प्रकृति क्या है। तो अगर हमको पता है कि हम हाई पित्ता वाले हैं, तो जब समर आए तो हमको ज्यादा ख्याल रखना है कि हम गर्मी मतलब धूप में बाहर नहीं जाएंगे, जहाँ बैठेंगे वहां ऐसे प्रिकॉशंस लेके रहेंगे कि हमारी बॉडी ठंडी रहे। हम छाछ लेते रहे, हम घी लेते रहे, हम अपने बॉडी को कॉशियसली ठंडा रखें। हम जैसे मैंने बताया था कि कोकोनट से मसाज करें, वो हमको कूल डाउन करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया, अगर हम वो सब फॉलो करेंगे तो डेफिनेट। प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम रेगुलर करने से हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व होता है। और छाछ अच्छा है क्या दही अच्छा है? ये कंपेरेबल नहीं है कि ये अच्छा है बट समर में मतलब छाछ मोस्टली सब ले सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किसकी प्रकृति कैसी है, किसकी विकृति कैसी है, तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग हो जाता है। बट हाँ, छाछ जो है वो बहुत सभी के लिए अच्छा होता है, ठीक है। कर्ड कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कम अमाउंट में लेना चाहिए, बट छाछ सब ही कोई ले सकते हैं। पर कोई बोलता है नाइट में वो दोनों ही नहीं लेना चाहिए बोलता है, ये करेक्ट है क्या गलत है? See, I have spent a lot of time in Bangalore, okay? Like 5 years I used to work. मैं 5 साल वहाँ जॉब की हूँ, 5 साल उसके पहले मेरा भाई वहाँ जॉब करता था, मैं वहाँ रही हूँ। And मैं एक तमिल ब्राह्मण के घर पे रहती थी, so and I've seen her taking छाछ all the 3 times. Curd and so we used to live like curd rice was the most stable खाना जो उनके घर पे बनता था, and they were very healthy people. एक्चुअली उनके नाड़ी में 0 दोष कभी कभी आता था, तो हम बड़े सरप्राइज हो जाते थे कि ऐसा कैसे हो गया। सो दैट्स वेरी क्लाइमेटिक डिपेंडेंट। और आपके जीन्स, जैसे कुछ लोगों के जीन्स होते वैसे हैं जो वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ लोगों के लिए वैसा होता है। जैसे बहुत ठंडा प्रदेश जो होता है उन लोगों के लिए वो अवॉइडेबल होता है, या फिर वैसे लोग जो कभी दही और छाछ ज्यादा खाए नहीं उन लोगों के लिए। बट एक जेनरिक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो छाछ कोई भी ले सकता है। इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है, मैं वो इन्फॉर्मेशन को कभी भी ये नहीं मानते ऑथेंटिकेटेड, है ना। तो गुड, वी शुड नो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव गूगल एंड यूट्यूब एंड अदर साइट्स, बट दैट कैन नॉट बी टेकन एज अ like prescription, as a doctor's suggestion. Yeah. Yes, बहुत ही अच्छा था आपका सेशन, इट इज बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। सो यस सुनंदा जी, आपको कुछ पूछना है? पूछिए सुनंदा जी। वो जो आपने बताया अल्कलाइन वेजिटेबल्स, तो वो कौन से होते हैं अल्कलाइन वेजिटेबल्स? मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल्स अल्कलाइन होते हैं, ठीक है।
आपके जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वो अल्कलाइन होते हैं, ठीक है। आपका लौकी, जो गॉड फैमिली बोलते हैं ना, लौकी, तोरई, ये सब अल्कलाइन होते हैं नेचर में। तो आप एक जेनरिक ये मानकर चल सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आर अल्कलाइन इन नेचर। जय गुरुदेव। हाँ, ये भी मैंने गुरुदेव से सुना है शायद कि वाटर भी अल्कलाइन वाटर पीना चाहिए। यस 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 यस, दैट इज काकड़ी और ये ना लेमन डाल के 1 liter. So alkaline water is also something very nice which you can take at all seasons. मतलब कोई भी ऐसा सीजन नहीं है जिसमें आपको अल्कलाइन वाटर नहीं लेना है, सब सीजन में लेना है, ठीक है। तो वो बनाते कैसे हैं, आप एक कांच, वैसे मेरा एक वीडियो है कि अल्कलाइन वाटर कैसे बनाया जाता है। If you want, I'll just send Rahul and Rahul can send it over to you all. But I'll just share shortly कि क्या होता है। कांच के कंटेनर में 1 liter वाटर लेना है और उसमें 4 स्लाइस खीरा, स्लाइस जैसे सलाद काटते हैं ना, वैसे 4 स्लाइस खीरा और 2 स्लाइस नींबू रात भर रख के छोड़ देंगे। सुबह उसको मतलब खीरा और नींबू को अलग कर देंगे और फिर वो पानी पी लेंगे। वो हमारे ओवरऑल बॉडी को अल्कलाइन रखता है, एसिडिटी से दूर रखता है। अल्कलाइन रहने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है जो आप लोग कर सकते हैं। आप इस मार्ग में कैसे आए? कैसे आए? भूल से आई। कैसे? अदरवाइज हाँ, एक्चुअली अदरवाइज मैं ऐसा इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं ना, वो है। वैसे बाबा जो है दिनेश, खुर्शीद बाटली वाला एंड दिनेश भैया यूज्ड टू से ना कि या तो तुम बहुत लकी होने चाहिए या तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होने चाहिए। तो हम बीच के इंटेलिजेंट लोग थे, है ना। तो हमको लगता था हम खुद इंटेलिजेंट है। तो मुझे जिसने ये कोर्स के लिए बोला, मुझे लगा ये कॉर्पोरेट कुछ एजुकेशनल कोर्स है, तो मैं उसमें गई थी, मुझे लगा था वो है। और वहां जाके मैंने देखा कि ओ माय गॉड, यहाँ तो, एंड आई हेटेड गुरुज, ओके, आई हेटेड गुरुज एंड आई श्री श्री रविशंकर टॉप लिस्ट पे थे जिनको मैं हेट करती थी, ठीक है। और मैं वहां जाके देखी कि ओ गॉड, ये तो गुरुजी की फोटो है, मतलब। बट क्या था, कोर्स मेरे पापा के फ्रेंड ले रहे थे तो अब निकल नहीं सकते थे। उस दिन तो बैठना ही पड़ता था। जब मोमेंट आई सैट, आई थॉट कल मैं नहीं आऊंगी, है ना। और तब 6 दिन के कोर्सेज होते थे, क्रिया सेकेंड डे होती थी। बट बाई चांस वो छोटा कोर्स था, उस वक्त वो थर्सडे को स्टार्ट हो रहा था और फर्स्ट डे क्रिया हो गई। सो आई थिंक नो, कोई भी ज्ञान तो मुझे नहीं कन्विंस कर सकता था। क्रिया वाज ऑफ कोर्स हम सभी के लिए, क्रिया इज द थिंग ना। तो वो भूल से हो गया, अदरवाइज तो आई थॉट कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ऐसा तो भूल से आ गई मैं। और कोई गुरु नहीं होगा तो भी बोलिए ना। गुरु इतना सारा, ये सब जो मैं आज हूँ मैकेनिकल इंजीनियर से, मतलब फिजिक्स से बायोलॉजी की जो जर्नी है वो पूरी की पूरी गुरु स्टोरी ही है ना। सो बट यस, क्योंकि गुरु जी का बर्थडे आने वाला है, 13 में आने वाला है, तो आई टेल यू अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। हाउ मच टाइम डू वी हैव, राहुल? आई थिंक टाइम तो हो गया है। नहीं, 10 तक है, 10 तक है। अच्छा ठीक है, 10 मिनट्स है। ओके, आई वेरी शॉर्टली कंप्लीट दिस, ओके। तो क्या हुआ था कि मैं बैंगलोर जस्ट गई थी जॉब के लिए, ओके। मैंने अप्रैल में ज्वाइन किया था और मई में गुरुजी का बर्थडे होता है, राइट। तो बट क्या था कि हमारा एक इवेंट था, मैं एक डिजिटल कम्युनिकेशन कंपनी में काम करती थी और एक होटल में एक इवेंट था। तो आई वाज वेरी, मैं अपने जॉब में बहुत न्यू थी, है ना। तो अब जस्ट ज्वाइन ही किया था और फर्स्ट सेलिब्रेशन था आश्रम में। तो मेरी पूरी आत्मा वहां आश्रम में थी, सिर्फ बॉडी मेरे काम में थी, ठीक है, वहां होटल में। लाइक ओ गॉड, ये कब खत्म होगा तो मैं आश्रम जाऊंगी, वहां गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। लाइक तब ना गुरुजी को देखना इतना इजी नहीं था, मतलब यूट्यूब पर भी आजकल तो गुरुजी बहुत लाइव आते हैं तो बहुत इजीली हम कनेक्टेड है, बट तब ऐसा नहीं होता था, है ना। तो फर्स्ट टाइम मैं बैंगलोर आई हूँ, मतलब आफ्टर फ्रॉम माई होम टाउन, और उसके बाद गुरुजी का फर्स्ट बड़ा सेलिब्रेशन था। लाइक वो गॉड, लाइक लिटरली मेरी आत्मा वहां थी और मेरी बॉडी यहाँ थी, है ना। सो सडनली देयर वाज, वहां मेरे एक और सीनियर थे जो एक दूसरे गुरु को मानते थे, बट ही न्यू कि मेरे लिए गुरु कितने इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनको बोले जाती, सर जल्दी खत्म कीजिए ना सर, मैं कब जाऊंगी, मेरे को जाना है।
एंड सडनली इज टेलिंग तुम्हारे गुरुजी ना नीचे वाले फ्लोर में आए हैं, मुझे लगा मेरे मजे ले रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि आश्रम में गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरा दिन इवेंट्स होने वाला है, गुरुजी को ऑब्वियसली 1 मिनट भी नहीं छोड़ा जाएगा, गुरुजी यहाँ सिटी कैसे आ सकते हैं? लाइक सर आप मजे मत लीजिए मेरे, है ना, लेकिन ये सच में आए हैं, ठीक है। एंड और वो मुझसे बहुत सीनियर थे, तो फिर मैं गई नीचे, देख कर तो आओ। मैं देखने गई गुरुजी, ठीक है, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये कैसे पॉसिबल है? और गुरुजी के साथ सिर्फ 2-3 लोग ही आए थे, एंड गुरुजी वाज जस्ट एंटरिंग दैट हॉल, ओके, गुरुजी वाज जस्ट, और वहां ऐसा कोई प्लान नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर होता तो हम लोगों को पहले से पता होता, सिटी के लोगों को, कि गुरुजी सिटी आने वाले। सो यू नो सो मच माय हार्ट क्रेव्ड फॉर इट कि गुरुजी आपका बर्थडे है, मुझे देखना है। तो बोलते ना कि गुरु स्वयं एक्चुअली आते हैं तुमसे मिलने, अगर तुम उतने दिल से पुकारो। तो गुरुजी आए और सिर्फ 2-3 लोग आए आश्रम से, और कोई नहीं, है ना। और वो डॉक्टर्स की कोई मीटिंग थी, तो वो लोग इतना, जैसे हम गुरुजी आते हैं तो बिल्कुल चढ़ जाते हैं ना गुरुजी के ऊपर, वैसा कोई नहीं कर रहा था। तो मैं बिल्कुल गुरुजी के पीछे पीछे, और उन लोगों को लगा कि मैं आश्रम से आई हूँ, हाँ। तो they allowed me in the stage, so I'm sitting in the stage with Guruji and I'm like watching him like this, और वो गुरुजी अपना टॉक वॉक दिए, फिर मैं गुरुजी के साथ नीचे गई, और सबको यही लग रहा है कि मैं आश्रम से आई हूँ। और फिर गुरुजी कार में बैठे, एंड आई डिड नॉट गो, क्योंकि मेरा तो काम बाकी था। एंड दे वर लाइक अरे ये कैसे नहीं गई अभी तक, या। तो इट वाज, आई स्टिल, क्योंकि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, आई रिमेम्बर दिस थिंग, जैसे आपने पूछा कि इट इज अ बिग थिंग ना, मतलब गुरुजी आश्रम से सब कुछ छोड़ के आए थे, सिर्फ मे बी आई बिलीव कि मेरे लिए आए थे, है ना, क्योंकि इतना दिल से मेरी आत्मा बिल्कुल ये कर रही थी, गुरुजी मुझे बर्थडे फर्स्ट टाइम आपको मिलना है। तो वो बोलते हैं ना, वो जो सुना था कि गुरुजी आते हैं, अगर आप उतने दिल से पुकारो तो गुरुजी आते हैं, तो गुरुजी आए थे। That was really a good story for me. Wow. Yeah. Great. बहुत अच्छी स्टोरी थी दीदी। दीदी आप एक इसके बारे में बताने वाले थे, जो आपने एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो आप Yes. थोड़ा सा अगर उसके बारे में एंड करते, फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में बता देते। So before we end, I'll just give you a brief thing of it कि astrology is not just about ना अपना फ्यूचर जानना या पास जानना। इट इज अ साइंस, इट्स अ डे टू डे साइंस, जिससे हमको अपनी लाइफ की इतनी सारी चीज पता चलती है ना, कि हमको कैसे रहना है, क्या खाना है। द बिगेस्ट थिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी विच आई लाइक दिस, हम आर्ट ऑफ लिविंग में बोलते हैं ना, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, बोलते हैं करना कितना डिफिकल्ट होता है, राइट? बट एस्ट्रोलॉजी रियली मेक्स this thing much easier, okay? तो इससे हमारी बहुत सारी चीज में हमको हेल्प हो जाता है, okay? So this is a very nice very big science, so maybe we can have another session जिसमें हम उसका थोड़ा सा, and I would again say I'm not an astrologer, I'm a student of astrology, but still of whatever I know, maybe we can add up with health, with diet and with exercise and with the season and all that, and we can have one more session. I'm sorry I speak in English naturally. तो आप लोग ना मुझे रिमाइंड करा हिंदी में बोलना है ना? ठीक है, तो हम एक और सेशन कर सकते हैं जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, जितना भी मुझे आता है उतना, कि हम वो हमारे हेल्थ को कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि बहुत बार पता है। सो दिस वाज अ प्रोसेस, दिस वाज एक ग्रेजुअल प्रोसेस था मेरे लिए, हर एक चीज न्यू सीखना। जब मैंने थेरेपी, डाइट और एक्सरसाइज तीनों सीख लिया, उसके बाद भी मैंने देखा कि कुछ लोग ठीक हो ही नहीं रहे। वो कितना भी सही खा लें, वो कितना भी एक्सरसाइज, राइट फूड, थेरेपी, मगर वो ठीक नहीं हो रहे। और कुछ लोग हैं कि हमने देखा है ना ऐसा कि गंदा ही खाते हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बिल्कुल नॉनवेज तीनों टाइम खा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। कैसे?
कुछ तो और है ना पीछे उसके. So astrology answers that question. So that is a very beautiful thing कि कैसे होता है वो कि कुछ लोगों के साथ कुछ भी खाओ तो चलता है और कुछ लोगों के साथ अच्छा से अच्छा खाने के बाद भी कुछ ना कुछ होता है. बट दैट डजंट मीन कि हम गंदा खाएंगे. Sometime you will have an effect of it for sure. कभी ना कभी तो उसका देना पड़ेगा, है ना. तो बट उसके पीछे कैसे साइंस एसोसिएटेड है, someday we will do that. Yes, करना चाहिए ना. यस यस जरूर करना चाहिए. आप नेक्स्ट सेशन जरूर हम रखेंगे. अभिषेक जी को बोलेंगे आप अगले सेशन यू टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी. डजंट मैटर, यू मिक्स हिंदी एंड इंग्लिश एंड स्पीक, वी ऑल कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. बहुत अच्छा हो जाएगा. आप जरूर आ जाइएगा. आज का सेशन बहुत बढ़िया है एंड वी शुड शेयर टू मेनी. दिस रियली यूजफुल सेशन. यू नो मेनी ऑफ अस आर नॉट अवेयर. सो those who are newcomers, please subscribe button दबा दीजिए and then Sattva talks देख लीजिए. पूजा मैम, you come again once again and tell us about astrology. जय Now गुरुदेव. Rahul take over. जय गुरुदेव. पूजा जी आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रहे हैं. थैंक यू. मैं हिंदी प्रदेश से हूँ बट वो हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि हिंदी है तो फिर हिंदी क्यों नहीं बोलना. पहला क्वेश्चन इंग्लिश में आया तो मैं इंग्लिश में शुरू हो गई. ऐसा हो नहीं, गया. एक्चुअली इन्होंने ना स्टडीज भी इंग्लिश में की है ना, तो थोड़ा सा इंग्लिश का ज्यादा जाता है. कि हिंदी पढ़ाई हम भी उसमें की है, काम भी उसमें किया है, तो वो it naturally happens होता है. naturally. But it was really very nice, Pooja. वेरी We इंस्पायरिंग. are thankful to you. थैंक यू सो मच. आप सभी लोग इससे जुड़े और मैं माफी चाहता हूँ कि हम लोगों ने ज्यादा इंग्लिश का यूज किया. मैंने ध्यान नहीं दिया उस तरफ. तो नेक्स्ट सेशन में राहुल जी डेफिनेटली अपनी हम बात ध्यान रखना. हाँ नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेफिनेटली सिर्फ हिंदी यूज करेंगे. तो क्योंकि उसी में हम सब लोग ज्यादा कंफर्टेबल है. तो पूजा दीदी थैंक यू सो मच. आप जुड़े और इतना अच्छे आपने इतने अच्छे इंसाइटफुल सारे टिप्स और हैक्स हमको बताया कि समर सीजन में किस तरीके से हम लोग एनर्जी को हाई रख सकते हैं और अपना फूड डाइट्स भी अच्छे कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. और ऑफ कोर्स हम लोग सब बहुत ही चाहेंगे कि आप और हम सब लोगों के साथ जुड़े और अगले सेशन में जल्द से जल्द हम लोग प्लान करें और फिर एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी और किस तरह से वो हेल्थ से रिलेटेड है वो सभी का हम लोग आपसे ज्ञान ले सके. तो थैंक यू दीदी. I would be very happy to share whatever I know. We Yeah. all are sharing, right? We are हाँ. only sharing. We all know something and we are just sharing. And maybe we'll talk about little about CST also today. आज हमने CS craniosacral therapy के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं किया. So next time we will include that. और अगर किसी को कोई specific तो मैं राहुल को वो दे दूंगी. मेरे जो चैनल है उसमें जो लिंक्स है ना उसमें काफी अच्छे हेल्दी एंड टेस्टी फूड का कॉम्बिनेशन है. कुछ रेसिपीज है, आप लोग वो देख सकते हो, है ना. And if there is anything specific, you can take my number, you can take my email ID from Rahul, and yes, be in touch. Yes, yeah, Pooja ji Sure, and Rahul sure. ji, we are sharing and caring. Yes. Thank you everyone. थैंक यू पूजा. Thank you. थैंक यू राहुल. Thank you. Thank you. जय गुरुदेव. जय Jai गुरुदेव. Gurudev. Jai Gurudev. जय गुरुदेव.